collaboration with the faculty members and also the employers. Thank you very much. So you guys are aware of what 3D printing is? Like what, can someone explain what exactly it is or how it works? So basically 3D printing is just making a 3D model from CAD and printing it layer by layer. So there are various technologies available. So where software slices the CAD model, and the 3D printer prints it layer by layer. So this is a figure 4 technology from 3D systems. So this is based on a DLP technology, digital light processing. So what we have, it's a resin-based printer. So what we have is a photocurable resin, and there's a UV projector light beneath. So it, the UV light cures the resin layer by layer. And this is the build platform onto which the 3D object or the 3D model, sticks to it, and comes up once the part is built layer by layer. So you have some samples here. You can see some printed samples already there. So and every 3D printing technology has a slicer, what we call the slicer. It slices the CAD model into layers, and whatever layer thickness you give, it's in microns usually, ranging from as low as 1 or 2 microns, it goes up to 100, 200 microns. Whatever layer thickness you give, the software slices the CAD model into layers and then sends to the printer. The code is given to the printer like an instruction to print it. So we can show you a demo where you import a CAD model, CAD file. The CAD input is usually in STL format. So the software which this 3D printer has is called 3D Sprint. So it can import CAD formats like STL, STP, IGS. So I'll just show you how you, right from importing the CAD file to loading the file for printing. So this is basically the interface of the software, where you get a simulated model build volume of this printer, which is 125 by 70 by 196. That is the build volume. So the part you can build is maximum, say 125, 70 to 196 in height. Build volume in the sense printable area. So this is the maximum area where you can print your part. Maybe your dimension of the part will be complemented with the dimension. What is your component? So have you ever about 3D printing? What is 3D printing? Anyone knows what is 3D printing now? So please let me know. I can explain why it is. Otherwise, you cannot understand what is going on. So you should know what is 3D printing first. Maybe if there is a demo presentation, when you have any doubt about 3D, additive manufacturing or 3D printing, 3D printing. So 3D printing machines. It's nothing but, so anyway, if you are creating any designs, right? So you need to make a 3D model, right? So if you want to validate it, if you want to production it. So once design it, you need to make a plastics as a 3D model. So you need a machines. This is the machines. It's a variety kind of machine with respect to technology. This is one of technology we are using. You can take the part, you can manufacture the part, it's kind of plastics. Which CAD software is used?
It's CAD not software, a CAD any, software. it's not a CAD software. Basically a slicer. CAD software you have like SolidWorks or Unity It's graphics. any software actually. That is to make a part basically. You make a 2D drawing into a 3D CAD model. This CAD model, the output is in the form of STL or STP or whatever. The slicer takes that CAD model, to slice it layer by layer. So I have imported a file here, which is an STL file basically. So this slicer accepts STL, STP, IGS, various other formats. So you simply import it, and in a resin-based printer, it is very important that you orient the part in such a way, to optimize the printing time and as well as the quality of the print. So just giving you the basics, you are importing the file, and in a resin-based printer, you always need supports. Or even if you must have seen a simple FDM printer, wherever there are overhangs, you need supports. These are supports, the stands. These are supports. You have to create it. Anyway, it's printing layer by layer technology. So wherever facing islands, which means no support connected, no contact with the print platform or part, you have to connect it. Then only printing linearly. So these are supports. The supports. So basically, you need to give an input to the machines. So for that, you need a software. Any 3D printing machines, it comes with a software, one software to slice the models. So you have to import your model, you have to prepare your model to give a machines. So have number of tools to use that. You can optimize the tool, maybe the rotation, maybe the changing, maybe the engraving, or maybe coloring, texturing. You can enter it. So once prepared, there is a procedure to transfer the machine. You have to follow it. So these are the support and start supports. You have to create support by using support icons. So support will be created automatically. Once support created, you have to send the part, send the output file to the machine using Wi-Fi or LAN. Okay. So this is a model. Here I have created the support. And imagine the part printing it. It's a bottom-up technology basically. So the print platform is going to print it in an inverted position. So imagine this being printed this way. The platform is going to dip into the resin, and the projection will cause curing of the resin, and it will stick to the platform, and it will start coming up layer by layer. Whatever layer thickness you give, say 10 microns, 50 microns, in that frequency it is going to come up. So simply I have created a support and I'm going to queue it to the printer. Go into the production. So at very early stage, using this kind of a technology, we can identify कि मेरा mold में मेरे process कहाँ पे flaws है. I can identify those issues. I can fix it up very quickly at any stage of time, and I can have a better product at the end of the day. So shrinkage, warpage, draft angle, और in process. जैसे मैंने CNC मशीनिंग कर लिया. मशीनिंग करने के पहले मेरे को चेक करना है मैंने मोल्ड बराबर मशीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ. क्योंकि एक बार मैंने CNC मशीन से मोल्ड उतार लिया नीचे, वापस वो अलाइनमेंट नहीं हुआ. तो अगर अलाइनमेंट चेंज हो गया, मेरा वापस प्रोसेस चेंज हो. अभी मैं CMM पे लेके नहीं जा सकता. टिपिकली हम क्या करते हैं, हम गेज यूज करेंगे, टेम्पलेट यूज करेंगे, या यूजर नॉर्मली एक्सपीरियंस हाथ से चेक करते हैं. But that is again a skill-based job. So now what? We have to depend on portable CMS. Portable CMS again और सारे limitation कि वो अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा एक जगह. क्योंकि portable CMS is born only in this radius.
अभी मेरे पास इतने छोटे पार्ट भी है, बड़े ये ना जस्ट इमेजिन ये पार्ट है, ओके, तो इसका मोल्ड कितना छोटा है, या फॉरगेट अबाउट दिस, ये भी थोड़ा बड़ा है, मान लो कि ये कैप है, या कैप से भी छोटे पीस वगैरह कुछ आते हैं, इतने छोटे छोटे मोल्ड रहते हैं, तो उसको मैं कैसे, उसके लिए छोटा चाहिए मुझे, या मेरे पास बड़े पार्ट भी है, लाइक बकेट हो गया या चेयर का मोल्ड हो गया, इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी ह्यूज, तो कितना चाहिए मैं ब्रो? सो हियर दिस इज अ सिस्टम which is capable of scanning from smallest part to bigger part, as small as like 5 mm, 4 mm, से लेके 1 मीटर, 1.5 मीटर, इनको that's the power and portability of the system, and you can carry this weighing only at 2.5 kg weight, and it's very easy to set up and very quickly you can move across it. And there are lots of manufacturing companies that are coming up in India. They've already been there. Just to, I'm sure, you must be aware about it. Like India is number 2 in mobile manufacturing across, taking over US. Now we are only lagging behind in China. If COVID would have not happened, we would have become number 1 manufacturing country in mobile manufacturing. And when it says mobile, it's very small packaging, right? इसके अंदर कितना कुछ है, आपका कैमरा का सेंसर है, रैम है, मोबाइल का है, there are many things. So require very extreme and precision quality checking, precision engineering, which require lots of precision stuff. And there are lots of applications or systems available from the sites to help you to make those things. Even in automobiles also, if I'm not wrong, we are ranked number 3 or number 4 globally in terms of manufacturing. And we are just moving toward that. And there are many others now. There are news about like another big industries is coming up, like toy industries. Earlier China used to dominate, but now there are lots of vendors who are competing with China and winning global orders. Beating them in their price. More important thing, and delivering the better quality product. So that is also another area where this technology can be used. So then toy, you have a concept. Could be in form of clay, could be a picture or something, or some kind of physical model. So capture करके I just made a miniature or something, and I can. So it's about, we call it a digital manufacturing. It's a combination of your 3D scanner, CAD/CAM software, 3D printers. That's we call it a digital manufacturing. And that's what towards like this is more. कोई भी नया मोबाइल लॉन्च होता है, उसके बाद मोबाइल के कवर पहले मार्केट में आ जाते हैं, वो कैसे आता है? तो सबसे स्कैनर, तो सबसे पहले क्या होता है, मोबाइल के सबसे पहले डमी मोबाइल पहले डीलर के पास आ जाता है, एक्चुअल मोबाइल आने से पहले। तो डमी मोबाइल को स्कैन करते हैं, बैक कवर मतलब स्कैन करते हैं, मतलब जो प्रोफाइल है पूरा एज इट इज स्कैन करके बैक कवर डिजाइन करते हैं। तो जैसे ही मोबाइल मार्केट में आया, उसके पहले अगली रात को ही सारे बैक कवर मार्केट में आ जाते हैं। और एक टाइप के कवर नहीं, जैसे सिलिकॉन हो गया, हार्ड केस कवर हो गया, सब टाइप के कवर एक ही रात में मार्केट में आ जाते हैं। Give another example. Nowadays, everybody is having an iPod or iPod or earpod, whatever you want. सबके ईयर की कैनल्स जो है वो हमें सबका अलग अलग साइज है. So how they have decided कि which size would be optimal? So they must have done 3D scanning and then they have standardized on some 3 or 4 sizes of the birds, which will actually fit into the ear canal of every human being. So it's not possible without this. देखिए मैं फिजिकली कितना ट्राई करूँगा, पहले मेरे को वर्चुअली करना पड़ेगा ना, फिजिकली अदरवाइज कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा. It could be a conversion, could be we have a health hazard, or could be many things. Even another area is like forensic science, where also people use 3D scanners. मतलब कि car crash हो गया या कुछ crime scenes है, they use a scanner just to capture as is data, and then they try to summarize or visualize or what could have went wrong or what could have been analysis. स्टार्ट करो. और भी आ रहे हैं और बोलो. इसने कुछ किया है अभी तक. वो सब यूज किया. I'm using right now SolidWorks as a
सेम सॉलिड वर्क से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ग्राफिक कमांड्स बहुत ज़्यादा इजी है, आप उसको रीड करके भी आप अपना समझ सकते हैं। सॉलिड वर्क में थोड़ा क्रिटिकल होता है, लेकिन एलेक्स में आपको बहुत बेस्ट ग्राफिक है। ओके, तो ये समझो मेरा मॉडल है, इसमें हम कोर कैविटी वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो ये समझो मैंने मॉडल बनाया हूँ, समझो इसका मुझे कोर कैविटी मैंने ये सब, पहले तो हमें इसे पहला प्लेन्स बनाने होंगे। ओके, प्लेन्स बनाने के बाद इसको सीयू करना होगा। सीयू क्या काम करता है, लाइक ये शीट है ना, सब अलग अलग रहते हैं। ओके, तो इसे हम सीयू करके एक बॉडी बनाते हैं, लाइक एक जॉइंट बनाते हैं। ये हमारा होता है पार्टिंग लाइन में ऑब्जेक्ट का। ओके, देन मैंने अंदर जो होल्स मेक किया हो उसे भी हमें पैक करना होता है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बॉन्डेड प्लेन से इसे पैक कर दिया था। बॉन्डेड प्लेन से पैक कर दिया। देन मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक स्केच बनाया। ये मेरा होगा ब्लॉक, जो मेरा मटेरियल होगा। ओके, उसमें से ये आर्टिकल निकलेगा। ओके, तो ये मेरा आर्टिकल है, अरे सॉरी, ये मेरा मटेरियल का स्केच है। मैंने ये ब्लॉक एक्सट्रूड किया, लेकिन मैंने ब्लॉक एक्सट्रूड किस में किया, नन में किया। अगर यूनाइट करता तो ये क्या होता है, यूनाइट मीन्स वो बॉडी को जॉइंट कर लेता था अंदर वाले बॉडी से। ओके, बट ये ऐसा नहीं है, ये नन में रखो, इसे ओके कर। लेकिन अब ये दो बॉडी है, लेकिन अंदर का बॉडी मुझे दिख नहीं रहा, मैं उसे ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल जे करके इसे मैं ट्रांसपेरेंसी कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल। अब जब लेक्चर्स अटेंड करोगे ना, अभी तो डेमो चालू, इसलिए फटाफट जो रहता है वो सब बताना। ठीक है, लेक्चर्स में आपको पर्सनली एक अच्छा जैसा। ओके, तो ये हमने कुछ ब्लॉक को ट्रांसपेरेंट कर लिया। ब्लॉक को ट्रांसपेरेंट किया, बॉडी में हम बॉडी सेलेक्ट करेंगे, एंड जितने भी मैंने ये प्लेन्स है, ये जो मेरे पार्टिंग लाइन थे ये वाले, एंड जो अंदर जो मैंने बनाया था ना, ये बॉन्डेड प्लेन्स जो मैंने होल पैक किए थे, उसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका स्प्लिट। अगर आपका स्प्लिट नहीं हुआ, दैट मीन्स आपका सबट्रैक्ट में कुछ तो डिफरेंस हुआ है। ओके, कुछ तो मिस्टेक्स हो गए, इसलिए वो नहीं हुआ। ओके, देन जाएंगे इजीली और इसे ओके करेंगे। ठीक है, ये बॉडी का ये मेरा आर्टिकल, ये था मेरा पंच। अब मैंने बॉडी हाइड कर दिया, इसके लिए मेरा कैविटी मैंने साइड में नहीं निकाला, बस ये आपको आर्टिकल्स एंड ये पंच का दिख रहा है। मैंने पैक किधर किया था, डाउन साइड में पैक किया था, ऊपर साइड में नहीं किया था, तो ये किधर आया, मेरे पंच में आया। ये था आपका कोर कैविटी कैसे निकालते हैं, ये छोटा मॉडल। ओके, ये भी हाइड कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओगे तो डायरेक्टली ड्राफ्टिंग में आएगा। न्यू शीट में यूज टैम्पलेट साइज क्या है, जैसे कि ये दिख रहा है सीमेंस का बना हुआ है ऑलरेडी, आप भी अपना बना सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बना हुआ है। और एक स्टैंडर्ड साइज है, जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड साइज फिक्स्ड होगा, उसको आप कोई चेंजेस कर नहीं सकते। तो वैसे शीट आपके पास क्रिएट होगी। फिर उसके बाद आते हैं आपके पास कस्टम साइज। कस्टम साइज में तो आप समझ गए कि आपको खुद का साइज जो चाहिए आप उसे डाल के आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ यूज टैम्पलेट साइज एंड ओके करता हूँ, कुछ क्लोज करते हैं। बेस व्यू कुछ आ गया ऐसा। अब बेस व्यू है ना, मैंने ये टॉप व्यू लगा, फ्रंट व्यू करूँगा तो फ्रंट व्यू आ जाएगा, जो आप देखोगे आइसोमेट्रिक। ओके, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसका रखता हूँ टॉप, क्योंकि मेरे होल्स भी दिखने चाहिए। ओके, एंड ये स्केल अभी ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है ना, तो मुझे चाहिए ये 1 Right. Basically photopolymer resins. cycloid. And these are thermosets basically. एक सॉफ्टवेयर पे भी हम डेमो दिखा सकते हैं, how you import the model, how you कौन सा orient सॉफ्टवेयर it. यूज़ कर रहे हो? 3D Sprint. So it comes with the printer. It's like a proprietary product of
आपके डिफरेंट टेक्नोलॉजी वेरी बेसिक जो टेक्नोलॉजी है वो है FDM और FFF। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करते हैं। उस एरिया में वो क्योर हो जाता है, क्योर होता है तो सॉलिडिफाई होता है। दैट्स व्हाई वी बेटर इसमें लेजर नहीं, इसमें प्रोजेक्टर है, इसमें प्रोजेक्टर है इसके नीचे डायरेक्टली रेजन ट्रे के नीचे there's a gas tray, there's a transparent plastic, not glass, transparent plastic और glass tray के ऊपर ये रेजन ट्रे है। माइक्रोमीटर यूज कर आप ऐसे पकड़ रहे हो, मैंने ऐसा पकड़ा है, मैंने ऐसा पकड़ा है, रीडिंग चेंज होगा। So what is the correct reading? That measurement is completely dependent on the individual skills and how he is going to use it. यहाँ पे कैसा है ऑपरेटर ह्यूमन डिपेंडेंट सिस्टम, ये मेरे को एक प्रिसाइज मेजरमेंट दे रहेगा, इससे मेरे टूलिंग मेरे पार्ट जो है वो एक परफेक्ट बनेगी राइट एट द फर्स्ट टाइम। अगर राइट एट द फर्स्ट टाइम है तो मेरा डेवलपमेंट टाइम कम हो जाएगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जाएगा, मेरा वेस्टेज कम होगा, आई एम एबल टू डिलीवर प्रोडक्ट फास्टर एंड बेटर एंड मोर इकोनॉमिकल। That's where people are using for your tooling inspection, in process जैसे आपका कोर कैविटी हो गया, मोल्ड वेस्ट हो गया, उसको आप यूज कर सकते हैं। That's where हम people are using। So किसी को कुछ questions है, queries है, पूछ सकते हो। Don't be afraid। मैं पहले अच्छा लिस्ट पर बढ़िया से क्वेश्चन है, you can ask me। टूलिंग वाले आपको तो रहेगा क्वेश्चन, क्या चले जाता है टूल डिजाइन में डाल दे तो वेरिएंटर होगा या नहीं होगा? होगा ना, कुछ तो वेरिएंटर होगा ना, तो वो कैसे समझेगा मेरे को हुआ नहीं हुआ, या कितने पीस के बाद होगा, वो कैसे समझेगा? मोल्ड तो आपको बताने वाला है नहीं यार, मैं अभी थक गया है, मेरे हाथ पे अभी मेरा टूट गया, ये टूट गया, वो तो हो गया है, तो छोड़ दो अभी। So you need to know, right? कितने टाइम के बाद, कितने साइकिल के बाद, कितने प्रोडक्शन के बाद वो पार्ट ब्रेक होगा या वेरिएंटर होगा या हमें रिपेयर करना पड़ेगा या मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सो दिस ऑल एप्लीकेशंस वी कैन यूज दिस 3D स्कैनर। So here we'll show like how this part is going to get scanned. कैसा है जैसे कि टर्न टेबल पे पार्ट रखा हुआ है, रोटेट हो रहा है, स्कैन हो रहा है और अलाइन हो रहा है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऑटोमेटिक जो भी नया जो मेजरमेंट डेटा आ रहा है वो ऑटोमेटिक अलाइन हो रहा है। और मेरा एक 3D मॉडल जनरेट हो रहा है, मैक्स मॉडल जनरेट हो रहा है। तो अगर आप लोग पैकेजिंग में राइट, अगर ये माउस है उसका पैकेजिंग कैसा आ रहा है मार्केट में, कैसा होता है? लॉजिटेक का माउस आपने देखा होगा, एक ब्लिस्टर रहेगा, प्लास्टिक की रहेगी, बस कवर कर दो, ये साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा लेंट होगा और बाद में एक पेपर जो बॉक्स रहता है उसमें फिटिंग होगा। तो बेसिकली वो शेप जो माउस जिसमें फिटिंग हो रहा है वो ब्लिस्टर का शेप कैसे जनरेट करेगा? वहाँ पे कुछ गैप रहता है तो कैसा है कि माउस है स्कैन कर रही है, आउटर शेप मिल गया डिजाइन से, ठीक है, और सम गैप क्रिएट कर रही है, ये एकदम फिटिंग नहीं होता है, फिट नहीं होता, थोड़ा लूज होता है ताकि इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ऑफसेट किया पूरा डिजाइन मतलब बाद में आपको पूरा एक शेप चाहिए जिसमें व्हील का शेप आ जाएगा, ये एज इट इज शेप आ जाएगा 1:1, तो वैसे पूरा पैकेजिंग में डिजाइन होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा उधर रिवर्स इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आप पार्ट को स्कैन करके उसका कैड मॉडल बना सकते हैं। Once you have the CAD model in hand, you can go for 3D printing. A complete digital manufacturing the work. If you are doing this course, it will definitely benefit you. तो आप डायरेक्टली यहाँ से ड्राफ्टिंग में जा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, डायरेक्टली आप ड्राफ्टिंग में आ जाओगे। अभी ये मैंने पहले बना के रखा था इसके लिए, तो न्यू शीट ओपन करेंगे, न्यू शीट ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे यूज टेम्पलेट दिख रहा है। यूज टेम्पलेट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा जो ऑलरेडी सिविल से आपका बना हुआ है, ओके।
यूज स्टैंडर्ड साइज करोगे आप, स्टैंडर्ड साइज में आपको यहाँ पर A4, A3, ओके, तो हम यूज करेंगे यूज टैब एंड इसे ओके करें, ओके, क्लोज कर दें। पेज व्यू से स्टार्ट करें, कुछ ऐसा आ गया आर्टिकल, ये मेरा आर्टिकल आ गया टॉप व्यू, ओके, क्यों, क्योंकि इधर टॉप व्यू है इसलिए। अगर इसे मैं तो बॉटम व्यू, तो ये बॉटम व्यू आ गया। अगर देखोगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अप डाउन होगा, ओके, अभी बने आप अपने चॉइस के व्यूज सिलेक्ट कर सकते हो और उसे आगे ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। एंड ये जो स्केल है, ये किस चीज़ का स्केल है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा ब्लॉक जो था मेरा वो 100 था टोटल, लेंथ, विड्थ और हाइट कितना था 100 बाय 100 ऐसा, ओके। तो अभी मैंने 1:1 रखा, इसके लिए टोटल 100 to 100 है, ओके। अगर मैं इसे 1:2 करता हूँ तो क्या हो गया, ये साइज उसका छोटा हो गया। अब जो साइज उसका हो गया वो 50 हो गया, लेकिन मैं 1:10 करूँगा तो कुछ ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसको हम रखते हैं 1:2, ओके। ये नॉर्मल व्यू है, टॉप व्यू, इसे क्लिक करें। अभी मुझे डायरेक्टली आ रहा है दूसरा व्यू, मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऐसे क्लोज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे जाके अभी मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ। नॉर्मल जैसे 2D में डायमेंशन निकालते हैं ना, सेम ड्राफ्टिंग में वही होता है। अगर 2D आपका एकदम पक्का है तो ड्राफ्टिंग आपके लिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायमेंशन निकाल के देता है आपके रेडी मॉडल का, ओके, रेडी मॉडल का आपका ड्राफ्टिंग निकाल के देता है। एंड अगर रेडियस निकालना है, आप यहाँ से रेडियस भी निकाल सकते हो, 20 का डायमीटर। और आपको इसमें साइजेस में कुछ चेंजेस करना है तो आप ये भी साइजेस चेंजेस कर सकते हो। इसमें जब भी कुछ भी ड्राफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा ना, आपको सीधा जाना है एडिट सेटिंग, एडिट सेटिंग में जाना है, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसे सिलेक्ट करना है, ओके करना है, इतने सारे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से आप जो चाहिए, आपको जो चेंजेस करना है ना, आपको यहाँ से ढूंढ के आपको सब मिल सकता है, ठीक है। कैसे करते हैं, अगर मुझे इसके सेक्शन व्यू दिखाना है सब मिड में से, तो मैं यहाँ पे पहले जाऊँगा सेक्शन